Hello student, welcome to SHIVAJI online classes. Student, today we will discuss exercise from chapter 6 which is heat transfer. So start with filling the blanks. First point is the increase in length of an iron rod on heating is called linear expansion. Student, as you know that the increase in length of an iron rod, the expansion is linear expansion, and the increase in area of a square, then the expansion is superficial expansion, and the increase in volume, then the expansion is cubical expansion. So the correct answer is linear expansion. Means to say जब भी आयरन रॉड में अगर उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा then you can say the expansion is linear expansion. Now the second point is when ice is placed in a thick glass tumbler, it cracks because the inner surface of glass contract. inner surface क्या होती? contract हो जाती, contract more than the outer surface. Student, as you know that जब भी आप आइस को ग्लास टम्बलर में रखते हो तो जो इनर सरफेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड व्हेन यू पोर हॉट वाटर इनटू अ ग्लास टम्बलर देन द इनर सरफेस इज एक्सपैंड. सो इस कंडीशन में अगर आइस रखते हो तो इनर सरफेस क्या होती? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती मोर देन द आउटर सरफेस. इसकी वजह से ग्लास क्या होगा? क्रैक हो जाएगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स डैश एंड सैग ड्यूरिंग समर. ड्यूरिंग समर में स्टूडेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स क्या होते हैं? वो एक्सपेंड हो जाते हैं, एंड इन विंटर में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज एक्सपेंड. Now, point number 4. A partially inflated balloon is placed near burning wood. After some time, the balloon gets dashed due to the expansion of air. जब भी स्टूडेंट एक्सपेंशन, एयर में एक्सपेंशन होगा तो बैलून क्या होगा? इन्फ्लेटेड हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेटेड. मीन्स a partially inflated balloon, इस कंडीशन में क्या है? partially है, ठीक है. तो a partially inflated balloon is placed near burning wood. After some time the balloon gets inflated due to the expansion of air. Now fifth point is a straight bimetallic strip on bands. bands किस कंडीशन में होगी? जब आप उसको हीट करोगे. So the correct answer is heating. Means a straight bimetallic strip on heating bands. Student, what is bimetallic strip? Are plates of two different metals which are riveted together at a number of points. The first metal is brass and the second metal is iron. Student, as you know that जब भी bimetallic strip को आप heat energy देते हो, उसको heat करते हो, then the brass is more expand as compared to इनवार. मीन्स ब्रास में एक्सपेंशन क्या होता है? इनवार मेटल के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है. सो द करेक्ट आंसर इज हीटिंग. मीन्स a straight bimetallic strip on heating bands. Now student, correct statement. The first statement is when a plate sheet of copper is heated, the increase in its area is called a cubical expansion. No, this statement is incorrect. कौन सा expansion होगा? एरिया में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एक्सपेंशन कौन सा है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी when a flat sheet of copper is heated, the increase in its area is called
superficial expansion. Superficial expansion. Now, second point is a bimetallic strip expand equally on heating and does not bend. स्टूडेंट क्या होता है, जब भी आप बायोमेटालिक स्ट्रिप को एक्सपेंड करते हो, हीट करने पर एक्सपेंड होती है, देन क्या होती है, बैंड होती है. सो द करेक्ट आंसर, अ bimetallic strip expand equally on heating and does bend. Now, third incorrect statement is an iron rim of a slightly smaller diameter than a wooden wheel is cooled so that it easily slips over wooden wheel. Student, the correct statement is an iron rim of a slightly smaller diameter than a wooden wheel is heated. यहाँ पे क्या आप राइट करोगे, cooled की जगह heated, so that it easily slips over wooden wheel. Now, student, the fourth statement is small gaps are provided between the railway lines to provide for easy transportation and laying of railway lines. Student, this statement is incorrect because small gaps are provided between the railway lines to provide a space for the iron metal to expand and contract during the summer and winter. Student, as you know that आयरन मेटल्स क्या होते हैं, समर में एक्सपेंड होते हैं एंड विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी स्मॉल गैप्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द रेलवे लाइंस टू प्रोवाइड a space for the iron metal to expand and contract during the summer and winter. Now, student, fifth statement is new electric wires for power transmission are fixed tightly if laid during summer. This prevents wires from snapping in winter. Student, this statement is incorrect because new electric wires for power transmission are kept slightly loose if laid during summer. So, the correct statement will be new electric wires for power transmission are kept slightly loose if laid during summer. This prevents wires from
snapping in winter. सो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे? फिक्स टाइटली को कट करके क्या राइट करना है? कैप्ड स्लाइटली लूज. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट पॉइंट इज a bimetallic strip is based on the principle that different metals have different thermal expansion for the same rise in temperature. Student, this statement is true. क्या होता है? सेम राइज मीन्स टेम्परेचर सेम है, डिफरेंट मेटल्स हैं, तो उसमें एक्सपेंशन भी, थर्मल एक्सपेंशन भी क्या होता है? डिफरेंट ही होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाइल लेइंग कंक्रीट स्लैब ऑन द फ्लोर tiny gaps are left so as to provide for the cubical expansion. Student, this statement is also false. Now third point is a thick glass tumbler does not crack when boiling hot tea is poured in it. Student, this statement is also false. मीन्स क्या होता है? जब भी आप हॉट वाटर को ग्लास टम्बलर में पोर करते हो तो ग्लास टम्बलर क्या होता है? क्रैक हो जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now student, fourth point is different liquids have same value of cubical expansion. Student, this statement is false. Now fifth point is all gases on heating have same value of cubical expansion. Student, this statement is true. मीन्स जितनी भी गैसेस हैं आप जब भी क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है तो उसमें क्या होता है? सेम होता है. बट डिफरेंट लिक्विड्स हैव नॉट सेम वैल्यू. मीन्स क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है? उसमें सेम वैल्यू नहीं. डिफरेंट लिक्विड्स में एक्सपेंशन भी डिफरेंट ही होता है. नाउ स्टूडेंट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट पॉइंट इज अ थिक ग्लास टम्बलर क्रैक्स व्हेन बॉइलिंग हॉट वाटर is poured into it because glass is a bad conductor of heat and inner surface of glass expands more than the outer surface and outer surface of glass expand more than the inner surface. Student, C points is wrong and correct option is D, which is A and B. दोनों कंडीशन में क्या होता है? जब भी थिक ग्लास टम्बलर में आप बॉइलिंग हॉट वाटर को पोर करते हो देन ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. मीन्स इसी वजह से जो इनर सरफेस की जो हीट एनर्जी है, मीन्स जो हॉट वाटर की हीट एनर्जी है, वो आउटर सरफेस तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाती बिकॉज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर. एंड सेकेंड पॉइंट, inner surface of glass expands more than the outer surface. So the correct option is D, which is A and B. Now students, second point is a bimetallic strip of brass and iron is straight at room temperature. When this bimetallic strip is heated, it bends such that iron takes the outer surface of bend. No, brass takes the outer surface of bend. Yes, so the correct option is B, and the bimetallic strip does not bend. This option is wrong and none of these. So the correct option is brass takes the outer surface of bends. Now student, third statement is small gaps are left between railway lines because we cannot have rails of very long summer. No. And B point, it allows for expansion of rails during summer. So the correct option is B. Now fourth point is iron tires, or we can say iron rim, are mounted on the wooden wheels of a tonga. Initially the diameter of the iron tire is slightly more than the wooden wheel. No. Slightly less than the wooden wheel. Yes. So the correct option is B. Slightly less than the wooden wheel.
Now fifth statement is a bimetallic strip is used a pressure cooker? No. A automatic fire alarm. So student this statement is correct. Means bimetallic strip को हम लोग कहाँ use करते हैं? Automatic fire alarm में. Now student match the correct statement. First statement is expansion produced in matter due to the absorption of heat energy. So the correct option is thermal expansion. Means जब भी मैटर में एक्सपेंशन होता है हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करने पे तो उसको क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन. नाउ सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सॉलिड only on the absorption of heat energy. So the correct option is C, which is linear expansion. Means जब भी लेंथ में इंक्रीज होता है तो क्या कहते हैं उसको? लीनियर एक्सपेंशन. Now third point is a flat and straight strip of metal made by riveting two flat and straight strip of brass and iron respectively. So the correct option is B, which is bimetallic strip. Now fourth point is increase in the area of a solid. Means किसमें increase हो रहा है? Area में. Area of a solid only on the absorption of heat energy. So the correct option is superficial expansion. सुपरफिशियल जब भी एरिया में इंक्रीज होता है तो उसको कौन सा एक्सपेंशन कहते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. सो स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन. नाउ स्टूडेंट today's class is over. Thank you.